Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Virtual Concepts, I welcome all of you to this lecture. This is our 15th lecture of the Fluid Mechanics series, and I'm your instructor, Dr. Fahad Munir Abbasi. At the start of this lecture, I'll give you a layout of it. Initially, we'll discuss some highlights of the previous lecture. पिछले lecture में हमने क्या क्या चीज़ें study की, किन चीज़ों को हमने pursue किया और वो क्या चीज़ें थी जिनके ऊपर हमारा focus रहा. शुरू में इनको हम discuss करेंगे. Then we'll go to the proof that the value of a stream function is constant along a streamline. Stream function और velocity potential से related जो चीज़ें हम discuss कर रहे थे उनको continue करते हुए आज ये हम proof भी करेंगे that the value of a stream function is constant along a streamline. Then we'll go through some examples in finding the equations of path lines and straight lines, and further examples finding the stream function and velocity potential and related to the analysis of the nature of flow. So आज का lecture ज़्यादातर deal करता computational work को, बहुत ज़्यादा computations हम करेंगे, calculations करेंगे, और जो पिछले एक दो lecture के अंदर हमने जो theory या जो laws या जो equation study किए हैं आज उनको analyze करेंगे, उनको use करते हुए different flow problems आज solve करेंगे और उनका analysis करेंगे. Particularly जो तीन चार चीज़ें हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स से कंटिन्यू हो रही हैं, जो टॉपिक्स अंडर डिस्कशन हैं, जिनके अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन शामिल है, जिनके अंदर स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम फंक्शंस और वेलोसिटी पोटेंशियल शामिल हैं, ये तीन चार चीज़ें जो हैं वो ज़रूर आज के लेक्चर के एतबार से इम्पॉर्टेंट हैं कि आज हम इनका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे एंड वी विल सॉल्व इक्वेशंस making use of the concepts what we studied in the previous lectures. Now in the previous lecture we went through the velocity potential, what is the velocity potential, and we saw that how it is related to the irrotational flow. When the curl of a velocity field is equal to 0, then we are able to calculate the velocity potential, and for this sort of flow we call it the potential flow. Then we studied the very important concept. I told you at that time as well that the concept of stream function is very important. हमने stream function को study किया, हमने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ regimes के अंदर, किस तरह मुख्तलिफ flow configurations के अंदर stream function की क्या importance है, particularly that it gives the mass flow rate for the compressible flows, and for incompressible flows it gives the volume flow rate. और फिर we determine the velocity components from the stream function. देखा कैसे अगर stream function हमें known हो तो हम उससे velocity components कैसे calculate कर सकते हैं, and vice versa as well. Then briefly at the end of the previous lecture we studied about the equations of path lines and street lines without calculating them because we were at that point we were concluding that lecture. But आज के lecture में हम equations of path lines and street lines भी find करेंगे when we'll move to those examples. So ये वो चीज़ें थी जो previous lecture के अंदर हमने पढ़ी और इनको analyze किया. आज के lecture में कुछ ज़्यादा जो है वो mathematical work है instead of any analysis or a theory sort of a thing. And I just advise you at the beginning of this lecture that you should start focusing on it. आप इस पे concentrate करें whatever we are going to do today, so that you can realize that how things work here and how we make use of the concepts and the equation which we learned in the for the calculation and for the analysis of different flow problems. Let's start. We'll go through first by showing that the value of stream function is constant along a streamline. Previous lecture में जब stream function के topic को close कर रहा था, I told you one way through which tells us that the value of stream function is constant along a streamline. But today आज हम इसी को लेके चलेंगे, but थोड़ा सा और तरीके से analyze करेंगे. Stream function अगर आप recall करें अगर आप stream function को recall करें तो it's simply defined in a manner that it satisfies the continuity equation identically. Further, for a two-dimensional motion
अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को पूछें या ये क्वेश्चन पूछें या मैं आपसे याद करूं कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस फॉर अ 2 डायमेंशनल मोशन, क्यों ये कहा जा रहा है या मैं ये क्यों कह रहा हूँ या मैंने ये क्यों लिखा है कि फॉर अ 2 डायमेंशनल मोशन. इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज आई टोल्ड यू and now you should be familiar with the fact that stream function only exists for the 2 dimensional flow. So इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखेंगे, 2 dimensional flow के लिए ही stream function exist करेगा. That's why whenever we are talking about the stream function, this means we are dealing with the 2 dimensional motion. Equation of streamline is, now आपसे पूछा जाएगा what is the equation of streamline for a 2 dimensional motion. So now at this point of time you should be able to pronounce it, you should be able to say it loud that this is the equation of streamline. So the equation of streamline dx by u dy by v. This is the equation of streamline, and from this equation we can write it down as v dx minus u dy equal to 0, and we name it as equation. Simply cross multiply किया हमने u और v को, and we obtained this equation 1. Now इसको यहीं पर छोड़ें एंड लेट्स सी, ये स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन है. कीप इन माइंड ये स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन. अभी हमने स्ट्रीम फंक्शन को नहीं टच किया, जो कि अब स्ट्रीम फंक्शन का एनालिसिस अब हम शुरू करने लगे हैं. सिंस द स्ट्रीम फंक्शन psi the function of x and y, and at this point आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि डिफरेंशियल ऑफ psi, because it's a 2 dimensional function, so we will calculate it using the chain rule. Partial psi by partial x dx plus partial psi by partial y dy. Simply हमने, because it was a function of 2 variables, so हमने इसको इस तरीके से in the form partial derivatives and total derivative लिख लिया. या अब अगर partial psi by partial x और partial psi by partial y की वैल्यू अगर आप पुट करें तो remember that this was equal to what? In terms of stream function, partial psi by partial x was equal to what? Yeah, let me recall you. Minus v dx plus u dy. So this is written here, and or in other words, अगर आप इसको rearrange करें तो you can write it as d psi is equal to u dy minus v dx, and you name it as equation 2. कैसे लिखा? You should be knowing. Okay, let me mention it here as u is equal to partial psi by partial u is equal to partial as u is equal to partial psi by partial y and v is equal to minus partial psi by partial x. तो हमने ये चीज़ यहाँ पे substitute की and we computed this equation. Now from 1 and 2, अगर आप 1 को देखें तो simply this thing is equal to 0. The right hand side of equation 2 is the same
as the right hand side, as the left hand side of equation 2, and this is equal to 0. So from 1 and 2 we can say that that d psi is equal to 0. देखिए अब हमने किया क्या, हमने simply stream function को calculate किया and then we computed it for a particular stream line which was given in equation 1. You saw that d psi is equal to 0 for that streamline, and that streamline was any random streamline. हमने उसके ऊपर कोई condition, कोई specification specify नहीं की कि इस किस्म की streamline होगी तब जाके ये चीज़ true होगी. No, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया. हमने सिंपली एक जनरल स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन डिराइव करते हुए वी शोड दैट डी साई इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज चेंज इन साई, डी साई, this is change in psi and this is equal to 0, so we can write as psi is equal to constant. And we can say that this result implies that the value of a stream function is constant along a streamline. Now keep this thing in mind that whenever you are dealing with a particular stream function और आप उसको किसी भी particular stream line के ऊपर evaluate करें तो stream line के from the start to the end stream function की value constant ही रहेगी. It can vary. अगर आप एक stream line से दूसरी stream line पे move करें तो value of stream function can change, but for a particular stream line it will remain the same हमेशा. And if you are asked to prove that the value of a stream function remains constant throughout a streamline, then you can go for this proof. Now let's move to the next example, and it says that the components of the velocity field are given by u is equal to kx e to the power minus kt, v is equal to ky, and w is equal to 0 for t greater than equal to 0 and k is equal to 1. What is the path line of the fluid particle coincident with the point x0, y0 at time t equal to 0? Now this is interesting. देखें हमने path line find out करनी है and the velocity field is provided to us. Interesting fact, interesting matter यहाँ पे ये है कि velocity field के x, y और z component हमें provided है, and also the z component of the velocity or w is equal to 0. k जो के अपीयर हो रहा है इसकी वैल्यू 1 है. सो इनको यूज करते हुए, इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स को यूज करते हुए वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ लाइन, और इनिशियली विल मूव फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन टुवर्ड्स दैट कांस्टेंट विद अ पर्टिकुलर पॉइंट. उस कोऑर्डिनेट्स आर x नॉट y नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0. पाथ लाइंस की इक्वेशन मैं लास्ट टाइम आपको बताया भी था, बट आई स्टिल थिंक दैट यू पीपल शुड बी say confused between the path line and the streak lines, that how we are going to handle, what is the difference between the path line and the streak line, and when we are calculating its equation, then how to pursue it. So that's why this example ko I have chosen, so that you become clear about how you can calculate the equation of a path line and how you can differentiate it from the equation of a streamline. देखिए, let's start. As u is equal to, what is u? This is simply the derivative of the x component of displacement, and so you can write it dx by
dt. And what is v? dy by dt. अगर याद करें उस इक्वेशन को तो जहाँ पे मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको equations of path lines and streamlines के बारे में बता रहा था, तो I told you that it's isomorphic or finding the equation of a path line is similar to the solution of the equation dr by dt, where r was equal to xi plus yj. Simply here it is. This is अगर v को आप component form में लिखें तो obviously this is equal to u and v for a two-dimensional flow field. So it's simply u is equal to dx by dt and v is equal to dy by dt. Now since the value of u and v are provided to us, dx by dt equals x e to the power minus t. हमने simply k की value 1 substitute कर दी है, which is given to us. Here it is provided that k is equal to 1, so we have simply substituted k is equal to 1 into this expression. And v is equal to dy by dt, which is equal to y itself. And obviously यहाँ पे हमने k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको लिखा है. Now देखें, this is the first order differential equation, dx by dt is equal to x e to the power minus t, and separable equation. आप इसको separate करके integrate कर सकते हैं and you can obtain the solution in the form of x and t. Similarly, this is a separable equation. You can divide both sides with y and you can solve it explicitly for y in terms of t, and same will go for the x. So हमने इसको simply integrate करके x और y को t की form के अंदर express करना है. If ordinary differential equation के course से आपको याद हो तो you can solve it. These are like parametric sort of equations and which are separable first order, and you can simply solve these equations. अगर नहीं भी सॉल्व कर सकते तो ओके, लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस. dx by x, and we integrated from x naught to x is equal to 0 to t e to the power minus t dt. Simply इसको देखें, हमने simply ये जो अपनी x component की equation थी इसको simply solve किया है. x को divide किया on the both sides and dt with the e to the power minus t. और limits of integration कहाँ से लिए हमने? Because we were to start with the point x naught y naught at t equal to 0. So simply यही चीज़ x naught से x and t 0 to t हमने यूज़ किया. एंड अगर y कंपोनेंट की इक्वेशन इसी पैरेलल इसके पैरेलल अगर हम लेके चलें तो इट विल बी से dy by y is equal to dt. This will be from y naught to y. This will be from 0 to t. Integrating now the integration gives us natural log of x over x naught is equal to 1 minus e to the power minus t. This is simply the integration of x component, and from y component again we get the same thing, natural log of y or y naught simply equal to t itself.
दोनों इक्वेशंस हैं, हमने इनको एक्सप्लिसिटली x एंड y के लिए सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ x नॉट एंड y नॉट. सो इसमें से x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, यू गेट x इज इक्वल टू x naught e to the power 1 minus e to the power minus t, and y is equal to y naught e to the power t. Now this is say interesting कि हमने किस तरीके से x को x naught और y naught की फॉर्म के अंदर सॉल्व कर लिया, also as a function of t, but we have incorporated the values of x naught and y naught, which shows that this is coincident with the point having the coordinates x naught and y naught. अब इनमें से एक को explicitly solve करके substitute करना है, and totally we have to make it independent of t. Let's see how it works. अभी तक हमने क्वेश्चंस को जो नंबरिंग दी है, let's see. जी, अभी तक हमने क्वेश्चन को कोई नंबर्स नहीं दिए, सो वी कैन सिंपली नेम इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, y over y naught is equal to e to the power t, or y naught or y e to the power minus t. एंड अब आप देखें हमने इसको इन्वर्ट क्यों किया. दिस इज इंटरेस्टिंग. वी हैव टू substitute e to the power minus t into this equation 1. So from equation 2 we obtained e to the power minus t. Here it is, and you name it as equation 3. Now using equation 3 in 1, we get x is equal to x naught e to the power 1 minus, here it is, e to the power minus t, and instead of e to the power minus t you will substitute y naught or y. So this is the form which we get when we substitute e to the power minus t into equation 1. Or in a simpler manner, x over x naught is equal to e to the power 1 minus y over y naught. Or simply, if you take log on both sides, then natural log x over x naught is equal to 1 minus y over y naught. Now this is a equation which is independent of t. There is no t appearing in this equation. और आपने इसको एक्सप्रेस भी कर लिया in terms of x naught and y naught. और अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके y as a function of x अगर आप लिखना चाहते हैं, then you can also go for it. Or it's simply y over y naught is equal to 1 minus natural log it's y naught over y. Let's start this slide again, Irfan. Now we have expressed y and y naught in terms of e to the power minus t. अब equation number 3 को equation 1 में substitute करके will make it independent of t. So
Substituting equation 3 in 1, we get x is equal to x naught e to the power 1 minus y naught over y. Simply e to the power minus t की जगह y naught over y we have substituted into this equation 1, which is called, or x over x naught equals 1 minus y naught over y, or taking log on both sides, अच्छा सिंपली ये अब x नॉट को दोनों तरफ डिवाइड क्यों किया और नेचुरल लॉग क्यों लिया, बिकॉज वी आर trying to express this explicitly in terms of x naught and y naught, y as a function of x and x naught y naught. That's why we are going through this calculation. Or simply आप y naught or y is equal to 1 minus natural log of x over x naught. Yet again you can say that y is equal to, we have inverted this, is equal to y naught over 1 minus natural log of x over x naught. So here this is the desired path line. This is the desired path line of the fluid particle जिसकी velocity हमें given थी, and it is coincident with the point x naught y naught. अब इसमें देखें हमने किया क्या, सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, विच वाज इन टर्म्स ऑफ dx एंड dy. हमने x और y के लिए एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया मेकिंग यूज ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट्स. ओके, देन वी मूव्ड ऑन. हमने इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम द गिवन पॉइंट, जिस गिवन पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट था उसको लोअर लिमिट लेके हमने इसको इंटीग्रेट किया और सिंपली t को एलिमिनेट किया बिटवीन दीज टू इक्वेशंस. और t को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बची हम एक्सप्लिसिटली हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ y here, and it gave us the desired path line for the fluid particle coincident with the point x naught and y naught. Now this was the path line. Let's move to the next example जहाँ पे आप मज़ीद देखेंगे. Again the velocity field is the same. For the velocity field given below, it is the same velocity field that we used in the previous example. For t greater than equal to 0 and k is equal to 1, find the equation of streak line passing through the point given by r is equal to ai plus bj. सेम वेलोसिटी फील्ड है, वहाँ पे हमने पाथ लाइन की इक्वेशन या पाथ लाइन फाइंड की थी, या हम स्ट्रीक लाइंस पास कर फाइंड आउट करेंगे या स्ट्रीक लाइन का रिलेशन या इक्वेशन फाइंड करेंगे. नाउ देखें कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस और क्या रिलेशनशिप है, कि हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाउ वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ अ पाथ लाइन एंड हाउ वी गो फॉर द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीक लाइन, और दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या है. अगेन परस्यू हम उसी तरीके से करेंगे सिंस u is equal to dx by dt and v is equal to dy by dt. Now adopting the same methodology, अगर उस सारे प्रोसेस से दोबारा गुजरें
we solved these equations and obtained the results. और जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किए थे हम डायरेक्टली वो लिखते हैं इंस्टेड कि मैं उस सारे प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करूं. जहां तक ये प्रोसीजर सेम है वहां तक इसको ऐसे लेके चलेंगे. बट अगर एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द स्ट्रीक लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो वहां पे आपने इसको सॉल्व जरूर करना है. इंस्टेड कि आप ये लिखते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर किया था उस तरीके से इसको करते हैं. नहीं, इंस्टेड आपने इसको सॉल्व करना है बजाय इसके कि ये लिखने के, क्योंकि यहाँ तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम आई रोट इट बिकॉज एक दफ़ा हम ये प्रोसीजर कर चुके हैं, दूसरी दफ़ा इसको अवॉइड करेंगे सिंपली. तो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को मेकिंग यूज ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी हमने सॉल्व किया. जब सॉल्व करेंगे तो आंसर केम आउट टू बी x नॉट इज इक्वल टू x is equal to x naught e to the power 1 minus e to the power minus t. If I am not wrong, then yeah, x is equal to x naught e to the power 1 minus e to the power minus t. That's perfectly okay. And y is equal to y naught e to the power t. Okay. जो कि equation 1 और equation 2 है इस previous example की, हमने simply ये pick up कर ली. And y is equal to y naught e to the power t, not minus t, x e to the power t. और हम इनको भी अगेन यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का नाम देते हैं. देखें अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन में फ़र्क क्या है. हमने x नॉट और y नॉट जो कि मटेरियल कोऑर्डिनेट्स थे पिछले एग्जांपल के अंदर, एंड t इक्वल टू 0 यूज किया था फॉर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इनको यूज करने के लिए हमने x नॉट, y नॉट और t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया था और यूज किया था इन द प्रीवियस इक्वेशन. यहाँ पे जब x नॉट के फॉर्म के अंदर इसको हम एक्सप्लिसिटली लिखेंगे तो विल से दैट x नॉट इज इक्वल टू x ओवर e to the power 1 minus e to the power minus tau, and y naught is equal to y over e to the power minus tau. This is equation 3. Name it as equation 4. Well, and the fluid particle at the position R AI plus BJ at time tau is given by सिंपली इक्वेशन 1 और 2 के अंदर हमने t की जगह टाउ रिप्लेस किया, बट इट इज एट द सेम थिंग बट सिंपली विद द टाउ और एट सम अदर टाइम. उस टाइम t के अलावा किसी और टाइम के ऊपर हमने उसको टाउ का नाम दे दिया, तो x नॉट एंड y नॉट कैन बी गिवन इन दिस फॉर्म. नाउ द फ्लूइड पार्टिकल एट द पोजिशन r which is the unit vector of that point with a as the x coordinate and b as the y coordinate. इस यूनिट वेक्टर के लिहाज से the position of the fluid particle will come out to be x naught. हम सिंपली x की जगह x coordinate इस पॉइंट का पुट करेंगे which is equal to a over 1 over e to the power ओके. सिंपली इक्वेशन 3 में x की जगह a पुट किया, x नॉट इज इक्वल टू a ओवर e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस
tau, name it as equation 5, and y naught is equal to y की जगह पोजिशन वेक्टर का b या x y कोऑर्डिनेट y की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं. इट विल कम आउट टू b ओवर e टू द पावर tau. एंड अगेन ऑब्वियसली यहाँ पे ये माइनस टाउ नहीं है, दिस इज प्लस टाउ, e to the power tau alone. Yep. And name it as equation 6. Now to find the equation of streak line, it is necessary, क्या necessary है जी equation of streak lines को find करने के लिए? It is necessary to substitute the values of x naught and y naught into 1 and 2. जो मटेरियल कोऑर्डिनेट्स x नॉट y नॉट के लिए इस पोजीशन वेक्टर के लिए हमने फाइंड आउट की, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इनटू इक्वेशन 1 एंड 2 में. अच्छा 1 एंड 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करके व्हाट विल हैपन, यानी कि जो कि इक्वेशन 1 एंड 2 जो थी दैट इज पाथ लाइंस इक्वेशंस के अंदर हम इन पर्टिकुलर x नॉट एंड y नॉट को सब्स्टिट्यूट करते हैं. याद रखें इक्वेशन 1 एंड 2 वर इक्वेशंस ऑफ पाथ लाइन, तो उन पर्टिकुलर पाथ लाइन इक्वेशंस के अंदर हम ये पर्टिकुलर पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट कर लें किसी एक प्रिसाइज टाइम टाउ के ऊपर. देखें स्ट्रीम लाइंस और पाथ लाइंस के अंदर फर्क, स्ट्रीक लाइंस और पाथ लाइंस के अंदर फर्क क्या. अब हम कर क्या रहे हैं, पाथ लाइन की इक्वेशंस हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की फॉर्म के अंदर मौजूद थी. दोज वर प्रेजेंट इन अ जर्नल फॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ t, जो कि t एक डोमेन है पूरी फ्रॉम 0 to से ग्रेटर देन 0. बट अब स्ट्रीक लाइंस के लिए हम x नॉट y नॉट की पर्टिकुलर वैल्यू, t की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हमने टाउ का नाम दिया, उसके लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इनटू क्वेश्चन ऑफ पाथ लाइंस. एंड यू विल सी how it works. We have उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके ये x नॉट और y नॉट की वैल्यू हमने 1 और 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी. वी हैव, और you can say by substituting 5 and 6 in 1 and 2 respectively, we get x is equal to x की जगह पे x नॉट की जगह पे, ये यहाँ पे x नॉट की जगह पे हमने x नॉट की वैल्यू इक्वेशन 5 से यहाँ सब्स्टिट्यूट की, और सिमिलरली y नॉट की जगह पे y नॉट की वैल्यू इक्वेशन 6 से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. So x comes out to be a e to the power 1 minus e to the power minus tau. In fact e to the power minus t, not tau, क्योंकि tau is in the e to the power minus t here over e to the power 1 minus e to the power minus tau, and y comes out to be y is equal to b e to the power t over e to the power tau. अच्छा सिंपली आप ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के, इनको दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, तो x और a
will be equal to e to the power 1 minus e to the power minus t over e1 minus e minus tau, and y over b is equal to e to the power t over e to the power tau. Okay, now simply इस इक्वेशन को हम इक्वेशन से 5 and 6 इक्वेशन 7 का नाम देना. अच्छा, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, या इसको इक्वेशन 8 का नाम, बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद विल मूव टुवर्ड्स दैट. सिंपली हम e टू द पावर t यहाँ से अगेन फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं अपनी इक्वेशन 7 के अंदर. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो y e टू द पावर tau over b is equal to e to the power t, and simply e to the power minus t is equal to b or e to the power minus tau over y, और simply 1 minus, देखें e to the power minus t हमने इसको इन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास बन गया b e to the power minus tau over y. लेकिन यहाँ पे हमें e to the power minus t alone नहीं चाहिए, we require it in the form of 1 minus e to the power minus t. So 1 minus e to the power minus t is equal to 1 minus b e to the power minus tau over y. This is the equation. Substitute this equation into equation 7, and ultimately put 8 in 7 and simplify. इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 के अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करें और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो यू will ultimately get the answer natural log of x over a is equal to 1 minus b over y e to the power minus tau. This is the desired equation of streak line. This is the desired equation of streak line for the given velocity field passing through the point with position vectors a and b. So देखिए फर्क क्या हुआ, हमने पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसको कैलकुलेट करके देन वी सब्स्टिट्यूटेड t, बट इसके अंदर we have the final solution is in the form of x, y, a, b and tau. So this is the difference between the path line and the streak line. Now going towards the next problem or the next word problem, which states that a two-dimensional incompressible flow field is given as u is equal to 2x and v is equal to minus 2y. Determine the stream function. Also indicate whether or not the given velocity field is irrotational. If it is irrotational in character, then determine the velocity potential. देखें to start a problem like this, सबसे पहले आप ये देखें what we have to do. We have to determine the stream function first. U is given to us, which is 2x, and v is given to us, which is minus 2y, and we have to find the stream function. So this should not be a great difficulty for you. Let's start. We know that u is equal to partial psi by partial y, and for this example this value of u is equal to 2x, and v is equal to minus partial psi by partial x, and for this particular example the value of v is given as minus 2y. So integrating both sides,
इंटीग्रेट करेंगे जब दोनों को, तो फ्रॉम दिस वी गेट psi is equal to 2xy, but since we are partially integrating with respect to y, so we'll get a function of x instead of a constant. And from v we get psi is equal to 2xy plus f of y. Name it as equation 1 and name this as equation 2. तो चूंकि एक ही वेलोसिटी फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं x एंड y कंपोनेंट और दोनों की वैल्यूज अलग अलग फॉल कर रही है, यहाँ पे psi is equal to 2xy f of x एंड यहाँ पे फ्रॉम v कंपोनेंट वी गेट 2xy प्लस f of y. सो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए फ्रॉम 1 एंड 2, ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है when f of x and f of y is equal to a particular constant, से c1 का नाम हम इसको दे देते हैं. ये जब किसी कांस्टेंट की वैल्यू में होगा तभी ये इसको अचीव करेगा. और दिस इज द डिजायर्ड स्ट्रीम फंक्शन विच वी रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था, जो हमने फाइंड आउट करना था. दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन. which is the required stream function containing an arbitrary constant c1. इसमें एक C1 भी मौजूद है, उसको वेरी करने से मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन हमें फाइंड आउट होती जाएंगी. अच्छा, दूसरी चीज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एग्जांपल, आल्सो इंडिकेट वेदर और नॉट द गिवन फ्लो field is irrotational. We have to find whether the given flow field is irrotational or not. Well, irrotational को कैसे, if it is irrotational in character, then determine the velocity potential. Okay, that's the next step. But सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि गिवन फ्लो फील्ड irrotational है कि नहीं, और अगर irrotational है then we have to go for the velocity potential here. Now in order for the flow field to be irrotational या रोटेशनल होने की क्या कंडीशन है जी? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड आस्क यू, क्या व्हाट इज द कंडीशन के जिसको अगर हम प्रूव कर दें तो फ्लो विल बी रोटेशनल और इरोटेशनल? व्हाट विल बी दैट? Obviously you should be able to answer the curl of a velocity. If it is equal to 0 then the flow is rotational, and if it is not equal to 0 then the flow is rotational, and if it is equal to 0 then the flow is irrotational obviously. So curl of V is equal to 0 or del cross V is equal to 0, or you can simply say that partial V by partial X minus partial U by partial Y should be equal to 0. And for the velocity field given here, since U is equal to 2x, so partial U by partial Y is equal to 0, and V is equal to minus 2y, so partial V by partial X is equal to 0. So this is for U is equal to 2y
and v is equal to for u is equal to minus 2x. Yeah, for u is equal to 2x and v is equal to minus 2y. जब u और वैल्यू u और v की गिवन वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we'll ultimately get 0 as curl of v is equal to 0, so the flow is irrotational. Now, अब irrotational तो हो गया, then what next we have to do? We have to find the velocity potential. हमने velocity potential find करना, and velocity potential can be found as velocity potential for irrotational flow field v is equal to minus del phi, where phi velocity potential, और simply अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो this is u is equal to minus partial phi by partial x and v is equal to minus partial phi by partial y, where u is equal to say 2x and v is equal to minus 2y. So simply इसको इंटीग्रेट करें अगर तो we'll get phi is equal to minus 2x square. In fact, this x square and this 2 will cancel out because we have integrated it over 2 plus a function of y here. And यहाँ पे भी phi is equal to minus 2y square over 2 plus f of x, and these two will cancel out here, and so phi is equal to minus x square plus f of y, and from here phi is equal to y square minus y square plus f of x. और equation 3 तक we have named the equation 4 and 5. चूंकि equation 4 और 5 एक ही velocity potential को represent कर रही हैं for the same components of velocity, so by comparing four and 5, you can say that phi is equal to y square minus x square. Simply यहाँ पे there is a plus sign क्योंकि this negative sign will cancel out here as this. Yeah. So y square plus x square plus a constant So this is the required velocity potential जो हमने कैलकुलेट किया. डिपेंड सबसे पहले ये देखते हुए कि velocity field is irrotational. तो irrotational velocity field के लिए we have calculated the velocity potential and which came out to be this equation star. Now for an incompressible, next example is for an incompressible fluid V is equal to minus omega y, omega x and 0 where omega is constant. Discuss the nature of the flow. We have to discuss the nature of the flow. Flow की क्या nature है जी? We have to discuss that. And for that सबसे पहले देखें analysis कैसे शुरू किया जाए. Velocity field is given. इसमें x component of the velocity is non-zero, y component of the velocity is non-zero and z component of the velocity is 0. So here we have two-dimensional velocity field. पहली चीज. दूसरी ये कि there is no time appearing in the components of the velocity. So we have
स्टडी टू डायमेंशनल फ्लो, पहली चीज जो हमने वेलोसिटी फील्ड को देखते हुए ही एनालाइज कर दी। दूसरी चीज, अगर हम इस पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एनालाइज करें तो बिकॉज इट इज फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सो वी कैन चेक डेल डॉट वी, एंड डेल डॉट वी इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस ओमेगा वाई plus partial by partial y omega x plus 0, and this is equal to 0 from here. So flow is incompressible. हमने ये भी वेरीफाई कर लिया, although it is given to us as well, लेकिन हमने इसको साथ साथ वेरीफाई भी कर लिया कि जनाब ऐसे परस्यू किया जाएगा। इन सम केसेस जहाँ पे इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड यू कैन गो फॉर इट बाय परफॉर्मिंग दिस थिंग। नाउ रोटेशनल और इररोटेशनल का ये दूसरी चीज़ है जी जो हमने वेरीफाई किया है। इससे पहले हमने स्टेडी स्टेट एंड टू डायमेंशनल का एनालिसिस किया था। तीसरी चीज़ क्या कि आइदर द फ्लो इज रोटेशनल और इररोटेशनल। सो तीसरी चीज़ इज डेल cross V, and which comes out to be I j k partial by partial x partial by partial y partial by partial z partial by partial, okay, minus omega y omega x and 0, and it comes out to be, this is 0, the z component is 0, and it comes out to be 2 omega k unit vector, which is not equal to 0. So the flow is rotational because the curl of the velocity is not equal to 0. The flow is irrotational as curl of velocity is not equal to the flow. Come on, इस स्लाइड को दोबारा इरफान स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, we'll go for this. So the flow is rotational as curl of the velocity field is not equal to 0. So तीसरी चीज जो हमें पता चली वो ये है कि the flow is irrotational. Okay. So ये rotation जो body की जो movement है, that is a rotational sort of a thing, and it is different from the irrotational behavior, as we have found out that the curl of the velocity is not equal to 0. Now the equations of streamlines, अगर हम streamlines की equations find करने लगें और उसको analyze करना चाहें तो देखें वो कैसे work out करेंगी। Streamlines की equations के लिए we simply write that equations of streamlines are given as dx by u, which is minus omega y, dy by v, which is omega x plus, not a plus, instead it's a 0, or it's equal to dz by w, and w here is equal to 0. So this appoints that dz is equal to 0 or z is equal to constant, पहली चीज. Secondly,
from these two equations you will see that x dx plus y dy equal to 0, and when we integrate we'll get x square plus y square is equal to a constant, से किसी भी कांस्टेंट का नाम दे दें से a, एंड अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सो द स्ट्रीम लाइन्स आर सर्कल्स। तो ये हमारा एनालिसिस था इस फ्लूइड के बिहेवियर के लिहाज से, पर्टिकुलरली फॉर द गिवन वेलोसिटी फील्ड, जो कि हमें वेलोसिटी फील्ड प्रोवाइडेड थी उस केस के लिए हमने इसको एनालाइज किया एंड हमने देखा किस तरीके से वर्कआउट करता है। सबसे पहले हमने देखा कि आइदर इट्स स्टेडी और अनस्टेडी और इट्स 2 or 3 dimensional flow, then we went through the incompressibility condition, then for the rotational and irrotational, और अगर फ्लो रोटेशनल होता तो फिर हम इसका वेलोसिटी पोटेंशियल भी फाइंड आउट करते, बट यहाँ पे बिकॉज इट वाज रोटेशनल फ्लो सो हमने वेलोसिटी पोटेंशियल की जहमत गवारा नहीं की। देन वी फाउंड आउट द इक्वेशंस ऑफ streamline, and streamlines came out to be circles. So this was the analysis of about the nature of the flow, and with this I take you towards the summary of this lecture. बीच में एक आध एग्जाम्पल इरफान रह गई है, and I'll settle it out in the next lecture. Now with this I take you towards the summary of this lecture, and in today's lecture we are going through the proof of the that the value of stream function is constant along a streamline. Then we did some examples in which we found the equations of path lines and streak lines. हमने देखा कि equations of path lines और streak lines कैसे find out की जा सकती हैं, and plus the fact कि दोनों में similarity और differences किस जगह के ऊपर अकर करते हैं. Then we solved some examples in which we found the stream function and velocity potential and analyzed the nature of the fluid. हमने देखा, हमने सबसे पहले उसको किस तरीके से लेके चले कि पहले हमने जो गिवन वेलोसिटी फील्ड थी उसको एनालाइज किया कि आइदर इट्स हाउ मेनी डायमेंशंस इट हैज़, देन हमने ये देखा कि आइदर इट डिपेंड्स अपॉन टाइम और नॉट, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्टेडी और अनस्टेडी वेलोसिटी फील्ड. उसके बाद हमने इनकम्प्रेसिबिलिटी से रिलेटेड उसको एनालाइज किया कि आइदर द फ्लो रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्टिकुलर वेलोसिटी फील्ड इज़ ऑफ रोटेशनल और इरोटेशनल टाइप, और फिर उसके बाद अगर उसका रोटेशनल और इरोटेशनल बिहेवियर को डिटरमिन करने के बाद अगर तो फ्लो इरोटेशनल टाइप था देन हमने उसका वेलोसिटी पोटेंशियल भी फाइंड किया, और अगर वो रोटेशनल टाइप था देन वी हैड नथिंग एल्स टू डू. देन इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन्स हमने फाइंड की, और स्ट्रीम लाइन्स फाइंड करने के बाद देखा कि अगर आप उसको उसकी मुख्तलिफ शेप हो सकती हैं, जैसे कि हमारी जो एग्जांपल हमने सॉल्व की उसके अंदर स्ट्रीम लाइन्स वर सर्कल्स, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी उसको सॉल्व किया. नाउ दिस इज द मेथोडोलॉजी, दिस इज द रफ टफ मेथड इन थ्रू व्हिच वी सॉल्व द इक्वेशंस. कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और कैसे फ्लूइड को एनालाइज करते हैं. और आपने देखा कि हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड भी एनालिसिस किए, जो कि हम पिछले 1-2 लेक्चर से भी कर रहे हैं. देन स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड भी कुछ एनालिसिस परफॉर्म किए, देन स्ट्रीम फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की, और वेलोसिटी पोटेंशियल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें डिस्कस की, जस्ट टू शो यू कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं और किस तरीके से आप इनको एनालाइज कर सकते हैं इफ़ यू आर टू डू इट in your exam or during your research. So this is the way to pursue it. और मज़ीद इसको carry out करेंगे in the upcoming lectures. And with this I'll take you to today's quote, and it says that there is always a hope left. ज़िंदगी और हालात जैसे भी गुजर रहे हों, but there is always a hope left. कभी भी ना उम्मीद मत हो, हमेशा 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 कोई ना कोई हल्की फुल्की उम्मीद ज़रूर रह जाती है. आपको सिर्फ उसको देखना और उसको एनालाइज करना है और उसको कैच करना.
ये वो चीज़ है जो इंसान को चलाए रखती है ज़िंदगी की तारीक रस्तों में भी और तारीक राहों में, इंसान को रुकने नहीं देती। ये छोटी सी जो उम्मीद है, ये इट इज़ द ड्रैगिंग फोर्स और इट इज़ द मोटिवेशनल फोर्स व्हिच जस्ट कीप्स यू मूविंग एंड टेक्स यू आउट ऑफ द डार्कनेस। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके लिए भी उम्मीद बने, अपने दिल के और दिमाग के दरवाजे इस तरह खुले रखें ताकि आप वो रोशनी देख सकें जो कि एक उम्मीद की किरण है, उसको देख सकें और अपने आप को इन अंधेरों से निकाल के आगे लेके जा सकें। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड बाय वन वे और द अदर, लेकिन कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू ड्रैग योर सेल्फ आउट ऑफ द डार्कनेस। किसी और का इंतज़ार मत करें कि कोई और आके आपको इस डार्कनेस से निकालेगा। ज़िंदगी के पैचेस होते हैं, समटाइम्स you are in the light and sometimes you are in the dark, but you should be capable of dragging yourself out of the darkness, सिर्फ और सिर्फ इस behalf पे कि आप उम्मीद की वो किरण देख सकें which lies at the end of the tunnel। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सी आसानी और कामयाबियाँ दे। Till our next lecture, it's Allah Hafiz from my side।